Good evening and welcome to Gunner Shot. Sat Sri Akal, Pranam and Jai Hind. Today we are going to talk of India's composite conventional deterrence through a missile force. और इस चीज के लिए बात करने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर अरुण सहगल जुड़े हुए हैं. Sir, good evening and thanks for joining us on Gunner Shot on this very important topic. So kind of you, because this is a topic which a lot of people hesitate to talk, and people with no knowledge shoot their mouth off. I know that you've been working on this and thinking about it very deeply, and I'm really thankful to you and on behalf of everyone who's watching Gunner Shot that you have chosen to, you know, tread this path, a difficult one. All yours, sir. Thank you, General Shankar. As usual, I'm delighted and honored to be part of the show. Uh, you know, today we are going to talk about a subject which is everybody believes he knows something about it, but we really do not understand it in detail. And I'm afraid I'm part of those people who don't understand it. So what I try to do is that following the announcement that India is going to develop its own conventional missile strike force based on our existing short and medium range systems, I started thinking about what should be this force look like. This was primarily because two things. One is the announcement was rather sketchy. It did not say anything. It says we will just have a missile strike force. There was no talk about what is this, what is the concept of deployment, what are the kind of missile system, what is the targeting philosophy, etc. So, so I have in a small write-up try to produce a small paper which tries to look at these issues, and there are those findings that I'll share with you. And I must confess, these are preliminary. I am open to challenge, which I will not fight. I will accept it graciously. And so, what I want to start up by saying is missile forces today are a part of a comprehensive conventional deterrence that spans tactical, operational, and strategic domains. See, if you do not have credible missile force of requisite ranges, which will come to that, when we are looking at at our challenges across the line of control or the line of actual control, we are just looking at with our existing systems and supported by the air power. Are they adequate for meeting those challenges? That's something which we need to understand, particularly given the current configuration of force capability matrix of our two adversaries. We have to understand that it will not be a war of attrition, but it will be likely to be a war of non-contact, which will be something related to anti-excess and area denial strategy, playing an important part of our overall conventional deterrence. And I'll come to that as to why do I say this. But you have to acknowledge one fact that the Ukraine conflict has shown us that the role of missiles for operational and strategic targeting has become a part and parcel of conventional war fighting. Therefore, Before yeah, okay. Before you this thing, sir, I'll take a clarification from you because most of the people who are listening to us, uh, well, they really don't understand certain terminology of ours. When you say operational, what do you mean? And when you say, strategic, what do you mean? We'll not talk of tactical. Tactical will come under this thing. So broadly. I mean, so that people do understand, and then we can. Okay, so the war is fought in three domains. Tactical is the immediate war, where we are immediate weapon systems are there.
Operational level wars are where the reserves are located, the enemy vulnerable areas, vulnerable points, his communication centers, from where the power to fight a war is generated so that the forces in contact can fight. It is also has the air defense systems, the large part of your long range artillery vectors, etc., are part of operational, and it also has ammunition dumps, the logistic nodes, etc. Beyond that are the strategic targets, and the strategic targets are that those targets which provide sustenance to the war effort. You have small sort of resources. For example, you need petroleum products, you need ammunition, you need roads, you need communication centers to move forces, you need an infrastructure for your system of systems approach in terms of location of your sensors, radars, etc. There are some deep long range radar, there's short range radars. So this whole and the sustenance effort is at the strategic depth. The support effort of the forward zone is at the operational depth, where the reserves and other areas, and then there is the tactical depth, where the hand-to-hand fighting is going on. So there are three tiers. So what has happened in the last couple of years is basically this: what have we had developed? Our capacities today are, for example, we have submerged systems, we have Pinaka systems, whose range can be increased, but they are essentially operating at the operational and just beyond the operational depth. After we have, I mean, we can even upgrade them should we require at a subsequent stage. But that is where, so when we say that the Chinese are building up their infrastructure in Ladakh, the infrastructure which is being built up is coming up at the operational depth. That's where formations are So, located, there's the dumps are located, etc., etc., etc. You have anything to say, sir, or clarify? no, you're perfectly fine, sir. So, what I would like to put across, clarify to everyone else or add कि जब हम मिसाइल और रॉकेट्स वगैरह के बारे में बात करते हैं, अमूमन राइट हम ऑपरेशनल डेप्थ और स्ट्रेटेजिक डेप्थ के बारे में बात करते हैं। टैक्टिकल डेप्थ के लिए जो इमीडिएट लड़ाई करने का जो डेप्थ है, रेंज है, वो नॉर्मल गन्स वगैरह के साथ हो जाता है। मिसाइल्स का जरूरत होता है जब थोड़ा अंदर जाते हैं, राइट? जैसे सर ने बताया, उनका जो बेसिक है जहां से वो फाइट करने की जरूरत है, उनका ऑपरेशनल डंप है, उनका मेंटेनेंस है, उनका लॉजिस्टिक्स है, वो पहुंचने के लिए जहां उनका हेवी वेट सिस्टम्स वहां से आते हैं, उनको अगर हम पकड़ेंगे तो वो ऑपरेशनल है। उसके पीछे वाला है स्ट्रेटेजिक डेप्थ, राइट? तो सबसे पहले है कि हमें, अगर हमें मिसाइल और ये चाहिए, हमें तीन टाइप के मिसाइल चाहिए जो टैक्टिकल डेप्थ में ऑपरेट करते हैं, स्ट्रेटेजिक डेप्थ, ऑपरेशनल डेप्थ और टैक्टिकल डेप्थ। तो ये है मोटा मोटा अभी तक हमने जो सीखा है। सो ऑल योर्स, प्लीज गो अहेड। Okay. So the bottom line, जैसे कि जनरल शंकर ने बोला, the bottom line is that missiles provide us the capacity and capability to hit targets at the operational and strategic depth. The reason and the logic I'll just come back to. So, taking this point into account, what I'm going to talk about today is what should be our doctrinal thinking in developing a missile force. What should be the parameters of our targeting philosophy in terms of the types of ranges of the missile system required for developing a credible missile capability, and also the possible role and the structure of the missile strike force. I will cover my talk in 4 different parts. फर्स्ट मुद्दा ये है कि मिसाइल फोर्स किसके पास है और वो उसको किस तरह इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर हम इस चीज को ध्यान में रखते हैं तो द फर्स्ट आर
our immediate attention goes to what is the PLA's rocket forces doing. PLA की रॉकेट फोर्स के अंदर बोथ कन्वेंशनल एंड स्ट्रेटेजिक मिसाइल सिस्टम में, जब मैं वर्ड स्ट्रेटेजिक मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल करूंगा उसका मतलब है न्यूक्लियर टिप मिसाइल्स है। तो ओके, न्यूक्लियर जो होता है वॉरहेड होता है जो मिसाइल के ऊपर आके लगता है, और कन्वेंशनल मिसाइल वो होती है जिसके ऊपर कन्वेंशनल वॉरहेड होता है। The second point I will discuss is the role and empowerment of Indian missile forces. Third issue I will discuss is कि हमारी टारगेटिंग फिलॉसफी क्या होगी, और मैं थोड़ा सा एक थोड़ा संक्षेप से बताऊंगा कि चाइना और पाकिस्तान और हमारे मैरीटाइम डोमेन में किस प्रकार के टारगेट्स हैं, एंड फिर मैं एंड में आपसे बातचीत करूंगा कि हमारी मिसाइल कैपेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, और उसके बाद हल्का सा मैं आपसे और बताऊंगा एक कमांड एंड कंट्रोल क्या होना चाहिए, और अब ये मिसाइल फोर्स को तैयार करने के लिए हमारे को क्या ठोस कदम उठाने चाहिए। What are the key aspects that we have to develop to ensure that we create this force in being in the shortest possible time? First and fundamental point is that I try to explain to कि PLA रॉकेट फोर्स क्या है। PLA के पास जो है दो तरह के सिस्टम्स हैं। उन्होंने सेकंड आर्टिलरी कोर बनाया था 1966 में, जो उसको नाम बदल के उन्होंने 2016 में उसको PLA रॉकेट फोर्स बना दिया। रॉकेट फोर्स जो है के अंदर दो तरह के वेपन सिस्टम है। एक उसी जो इसके अंदर हम उनको बेसिस बोलते हैं, बेसिस के अंदर और बेसिस के नीचे आते हैं ब्रिगेड्स। अगर हम एक कोई भी आप PLA रॉकेट फोर्स का ब्रिगेड लें जिससे आप समझते हैं, उसके अंदर स्ट्रेटेजिक वेक्टर भी होंगे, स्ट्रेटेजिक मिसाइल भी होंगे और कन्वेंशनल मिसाइल भी होंगे। और हम कैसे डिड्यूस करते हैं कि उनके पास कन्वेंशनल मिसाइल फोर्स क्या है और उनके पास स्ट्रेटेजिक फोर्स क्या है। अगर हम नंबर्स देखें तो चीन के पास आज की तारीख में सिर्फ 275 से 400 के करीब जो है वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, जो कि कहा जाता है, असेसमेंट है कि भाई 2035 तक 1500 के करीब बन जाएंगे। पर अगर उनके हम मिसाइल सिस्टम देखें, वो जो जिसको हम मिसाइल वेक्टर्स भी बोलते हैं, दे आर इन द रेंज ऑफ 2200 to 4000। So what we have to understand is that he has, in addition to his nuclear weapons, close to 1500 plus conventional missile vectors which he can use to his advantage in any conflict situation. So this is a very important deduction that we have to understand. और ये किस टाइप के हैं, उनके जो मेन जो लॉन्ग रेंज वेक्टर्स हैं जिनको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स कहते हैं, वो सिर्फ न्यूक्लियर वेपन बेस्ड हैं, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग रेंज जाना है 14,000, 15,000, 20,000 किलोमीटर की रेंज पे, तो वो तो है न्यूक्लियर वेक्टर्स। उसके नीचे आते हैं इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, जो कि 3,000, 2,500, 3,000, 5,000 की रेंज के हैं। ये मिक्सचर होंगे, परंतु जो है तकरीबन 3,000, 3,500 तक के जो है उनके जो सिस्टम्स हैं वो कन्वेंशनल हैं, और उसके ओवर 5-7 हज़ार के ऊपर जो है, जैसे कि हमारी अग्नि है 5,500 की, वो एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, वो जो है वो न्यूक्लियर होगा। उसके बाद उसमें शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल, और अभी वो डेवलप कर रहा है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स एंड अमंग अदर ऑल तरह की मिसाइल वो कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट डिडक्शन से इससे ये बनती है कि चाइनीज स्ट्रेटेजिक डिटरेंस जो है, और उसका एक ड्यूलिटी है, दो तरह के सिस्टम के साथ बनाया गया है, एक है न्यूक्लियर सिस्टम और एक कन्वेंशनल सिस्टम। जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि चाइना प्रोफेस करता है मैं नो फर्स्ट यूज पावर हूं, और नो फर्स्ट यूज पावर उसका बेसिक डॉक्ट्रिन ये है, चाइना इज अ नो फर्स्ट यूज पावर बट सर्टिट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स। अगर मेरे अगेंस्ट कुछ अटैक हुआ तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, तो ये तो न्यूक्लियर डोमेन में हुआ। परंतु हम सब जानते हैं, अभी हमने जो यूक्रेन भी हमें बता रहा है, क्रॉसिंग द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड इज नॉट इजी, एंड येट
there are large number of strategic targets which needs to be engaged, which can become a serious challenge to your capabilities and your attempts at escalation dominance. मैं कि escalation को मैं कैसे कंट्रोल करूं, तो इस मुद्दे को अगर हम लेते हैं तो कन्वेंशनल मिसाइल्स का एक तरह का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है। कन्वेंशनल मिसाइल 2 या 3 इंपॉर्टेंट पर्पस सर्व करते हैं। देख, उनसे डेप्थ टारगेट्स को एंगेज कर सकते हैं। रफली स्पीकिंग अगर आप देखें कि अगर चाइनीज मिसाइल जो है फॉरवर्ड एरिया में लड़ाई हो रही है, जैसे ईस्टर्न लद्दाख में लड़ाई हो रही है, तो साथ ही साथ उनके जो मिसाइल्स हैं वो हमारे डेप्थ टारगेट्स, यानी कि लद्दाख की जो लेह की एयरफील्ड है, कई और इम्पोर्टेंट टारगेट्स हैं, हमारे इम्पोर्टेंट टनल्स हैं जिसके अंदर से हमारे लॉजिस्टिक्स मूव करती हैं, लॉजिस्टिक नोड्स हैं, लॉजिस्टिक थ्रेशोल्ड्स हैं, उनको अटैक कर सकती है और हमारा जो है फाइटिंग पोटेंशियल को डिग्रेड कर सकती है। सो एक बात तो ये है कि their conventional forces are employed in depth targets for 2 reasons, एक to causing degradation और दूसरा उनका काम होता है थ्रेशोल्ड्स को हाईलाइट करना कि भाई अगर आपकी ये लड़ाई जो है मेरे अगेंस्ट जाएगी तो मैं इसको एस्केलेट करूंगा, और उसका एस्केलेशन हमारा फर्स्ट स्टेप होगा यूज ऑफ मिसाइल सिस्टम अगेंस्ट योर क्रिटिकल टारगेट्स इन डेप्थ, एंड सेकंड इज आई कैन देन इवन एस्केलेट टू, और अगर मेरे से ये सिचुएशन जो है एडवर्स होती रही मेरे अगेंस्ट तो मैं न्यूक्लियर डायमेंशन भी जा सकता हूँ। सो एक तरह से एक डेग्रेडेशन एंड वार्निंग स्ट्राइक दोनों का काम करती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और चाइना स्ट्रैटेजी क्या है मिसाइल को यूटिलाइज करने की, ये मैंने एक संक्षेप से मैं थोड़ी 2-3 चीजें हाइड करना चाहता हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसे मैंने बताया, कन्वेंशनल मिसाइल्स आर बोथ फॉर डिटरेंस एंड रिटेलिएशन, एंड देयर यूज जो है इज बेस्ड ऑन स्ट्राइक फर्स्ट, स्ट्राइक हार्ड, स्ट्राइक प्रिसाइजली, प्रिसाइज टारगेट को मारना है, एंड रैपिडली। दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। अगर जब हम अपने मिसाइल सिस्टम को बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये 4 एलिमेंट्स ऑफ स्ट्राइक फर्स्ट, हार्ड, precisely and rapidly become an important point for us. Second issue is preemption and striking critical targets as a part of a conventional strike campaign. आप ये मत सोचिए कि लड़ाई जो है एक सीक्वेंस से होगी। लड़ाई जो है एक बारी डिटरेंस ब्रेकडाउन हुआ तो डिटरेंस जो है टैक्टिकल लेवल में ब्रेकडाउन करेगा, ऑपरेशनल लेवल में ब्रेकडाउन करेगा और स्ट्रेटेजिक लेवल में ब्रेकडाउन करेगा। और साथ ही साथ में आजकल एक नई नोशन आ रही है जिसको हम कहते हैं प्रीएम्प्टिव डिटरेंस। और प्रीएम्प्टिव डिटरेंस का मतलब ये है कि जो दुश्मन जो है वो साइबर और पावर अटैक्स, हमारे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के ओवर अटैक करके हमारे को डिग्रेड करने की है, ताकि हमारे पास पावर वॉटेजेस जो हैं वो कम हो जाए और हमारे सेंसर्स जो हैं वो काम करना बंद कर दे। सो ये एक तरह का वो एक प्रीएम्प्शन कैंपेन है। द सेकंड एलिमेंट इसका उनका जो है कि इवन वीकन दुश्मन की स्ट्रेंथ थ्रू फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेग्रेडेशन। मतलब कि एक तरह की कमांड स्ट्रक्चर जो है, इसी कमांडर्स लड़ाई लड़ते हैं। कमांडर्स की लड़ाई का मतलब ये होता है कि कमांडर्स की परसेप्शन क्या है, फ्रंट में क्या हो रहा है, अब मेरे पीछे क्या हो रहा है और मेरी डेप्थ में क्या हो रहा है। अगर आगे, बीच में और जो पीछे जो ऑपरेशनल एरिया कहते हैं और जो मेरी डेप्थ में है, अगर तीनों साइमल्टेनियसली अटैक हो जाए तो एक तरह का एक डेग्रेडेटिव माइंडसेट बन जाता है। द आइडिया इज टू सीज इनिशिएटिव एंड एस्केलेशन कंट्रोल, इनिशिएटिव को कंट्रोल करना और एस्केलेशन को कंट्रोल करना। So this, to understand that the missile strikes will be at the operational and the strategic level, brings in एक important हिस्सा ले आते हैं कि हमारी conventional missile force कैसी होनी चाहिए। So that brings into question the issue of range and accuracy.
मिसाइल फोर्स की रेंज क्या होनी चाहिए और क्या एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो इस करके अगर देखा जाए तो मैंने जैसे पहले बताया था आपको, चाइनीज आर कंसिडरिंग जो है वो 3 तरह के मिसाइल रेंजेस को ध्यान कर रहे हैं। एक है 1000 किलोमीटर, दूसरा है मीडियम रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर, और इंटरमीडिएट रेंज 2000 से 3500 किलोमीटर। इसके अंदर जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे हमने कहा कि स्ट्राइक एक्यूरेसी, ओके, एंड कैपेबिलिटी, तो 2 चीजें बन जाती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। वन इज द प्रिसीजन स्ट्राइक, मतलब कि टारगेट को जो है प्रिसीजन से स्ट्राइक करना है। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो है वो सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो कम होगा, क्योंकि बेसिक एम इज टू अवॉइड कोलैटरल सिविलियन डैमेजेस दैट कैन क्रिएट ह्यूज अमाउंट ऑफ एन इंटरनेशनल सिचुएशन. So, therefore, what is the requirement of missile system? Range and strike accuracy, ensuring target degradation at various stages in multiple terrain environment, including at sea. So, this is the broad outline of the Chinese missile force capacities and capabilities. जो एक तरह से हमारे को मैंने उनको हाईलाइट किया so that we can draw some useful lessons. Do you want to say anything, sir? No, fine. Please go ahead. Okay. The next point is role and employment of India's missile strike forces. Fundamentally, we have to understand is that the first driver of missile force must be based on doctrine of credible response and degradation in any conflict scenario. The idea of missile is this. हम कहते रहते हैं कि जी चीनी आ गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया, ये कर लिया, और वो उनका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, जब चाहा 100 गाड़ियां ऊपर भेज दी, 100 गाड़ियां 1500 गाड़ियां ऊपर आ गई, टैंक आ गए ऊपर. सो द क्वेश्चन बेसिकली इज दिस: the importance of missile force and associated vectors. Missile force is not the only vector. The associated long range vectors which are available with us, particularly both now that we are getting UAVs, armed UAVs, attack UAVs, a number of other our air power, all those in sum total must be able to carry out credible degradation, and we provide a credible response to the other side in any conflict scenario. Can I come in, sir? 1 minute. मैं Yeah, ये please. बिकॉज आपने जो बहुत अहम बात बोला है, मैं उसको रीइंफोर्स करना चाहता हूँ. सर ने जो बोला है क्रेडिबल रेस्पॉन्स एंड डिग्रेडेशन, राइट? तो अगर आप देखेंगे ये जो मिसाइल फोर्स जो है वो आम लड़ाई की फोर्स नहीं है. ये एक हायर लेवल की लड़ाई का फोर्स है. ये थोड़ा आपको समझना चाहिए. और इसमें क्या है कि हमें ये क्षमता होना चाहिए कि पहले इसको जिस तरीके से हम डिप्लॉय करें, जिस तरीके से हम रखें, जो भी हमारा फोर्स है, वो चाहे वो 1000 किलोमीटर का हो या 100 किलोमीटर का हो या 2000 किलोमीटर का, उससे फर्क नहीं पड़ता. तो जो भी हमारे पास है वो चाइनियों को इन द साइनो इंडियन कॉन्टेक्स्ट हमें एक उनको संदेशा देना चाहिए कि भाई हमारे पास ये काबिलियत है, अगर आप ये करोगे तो हम ये कर सकते हैं. तो वो जो संदेशा, और दूसरी बात यह है, और जो संदेशा हम देंगे उनको कि भाई हम हमारे पास ये काबिलियत है और इसके साथ हम ये करेंगे, उसे आपने पहले तो आपको डिटरेंस मिलेगा. अगर वो नहीं मानते हैं तो उनको डिग्रेडेशन करने की हमारे पास क्षमता होना चाहिए. क्रेडिबल रिस्पॉन्स, यानी कि पक्का उसको मारेंगे, और उसका दृढ़ निश्चय होना चाहिए, उसका पॉलिटिकल विल होना चाहिए, और उसका काबिलियत होना चाहिए. वो क्या काबिलियत है वगैरह वगैरह हम आगे जाके हम डिस्कस करेंगे. ऑल योर्स सर. Thank you. So, the yet another part of what the General Saab has very rightly pointed out is this will lead the other side to dissipate his forces for much larger area protection
than he would have otherwise done. See, so that's another important point. So the first task for the missile force, therefore, is area denial with the capability of striking simultaneously at operational and strategic targets such as depth airfields, logistics and communication nodes, and communication centers, which are critical to the war effort of the other side. So the point which I am trying to put across is this: जो मुद्दा बेसिक मुद्दा ये है कि यही नहीं है कि दुश्मन जो है और हमारा जिसके साथ हमारी लड़ाई हो रही है वो सिर्फ आगे की ही सोचे, परंतु उसको 360 डिग्री डायमेंशन में सोचना पड़ेगा। कहीं से भी अटैक आ सकता है, वेक्टर्स कोई भी हो, वेक्टर्स छोटे रेंज का हो, बड़े रेंज का हो। सो ही हैज टू देन अर्लियर रादर प्रोटेक्टिंग 15 से 20 या 30 किलोमीटर का एरिया एलएसी के पीछे, नाउ ही हैज टू प्रोटेक्ट 1000 kilometers area at the back, and with his key centers which are facilitating his war effort, all under a possible attack from the other side. So this changes the dynamics of his perception of war and makes his general staff rethink in terms of escalation. This is a very important aspect which I want to highlight. So the second point we have to understand is, in developing a missile strike force, is we have to formalize theater level conventional plans that are aimed at seizing the initiative in the early stages of conflict. It cannot be that we fight to his tune. He can initiate the conflict. Let's take a scenario, in the present scenario, that if there is an escalation, say over Depsang, Chumar, whatever, Demchok or whatever it is, the perception in everybody's mind is, सबके दिमाग में ये perception है कि ये लड़ाई तो चुम्मर और देमचौक और देपसंग में होगी। नहीं, लड़ाई यहाँ नहीं होगी, लड़ाई उसके ऑपरेशनल डेप्थ में होगी, जहाँ पे उसके रियर डिप्लॉयमेंट एरियाज हैं, उसके लॉजिस्टिक नोड्स हैं, उसके एम्युनिशन डंप हैं, और जरूरत पड़ी उसकी नेक्स्ट स्टेज होगी कि जो उसके जो 500 से 700 किलोमीटर डेप्थ में जो उसके लोकेशन है, जैसे कि वो लासा रेलवे लाइन का जंक्शन है और भी कई स्ट्रेटेजिक एयरफील्ड्स है जहाँ पे वो फोर्स बिल्डअप के लिए लार्ज स्केल ट्रांसपोर्ट प्लेन्स ला सकता है, वो सबके सबको अंडर अटैक हो सकते हैं। तो नाउ यू प्लीज थिंक इन टर्म्स ऑफ द माइंडसेट ऑफ द डिफेंडर। दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन दिस सर। जो आपने अभी बोला है, मैं ये मैप के जरिए आपको इनको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, ये तिब्बत है, और इनफैक्ट तिब्बत का मैप है आगे, इंडिया का मैप, और उस साइड तिब्बत का मैप है। और मैं खास करके चाइना नहीं बोल रहा हूँ, तिब्बत बोल रहा हूँ, राइट। अगर आप देखेंगे तो ये पूरा तिब्बत में क्या है कि 3 ही रास्ते हैं अंदर आने के, मोटे मोटे तौर पर। एक ऊपर से आता है, और एक ईस्ट से आता है, और एक सेंट्रल आता है। ये इसको बोलते हैं ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, उसको बोलते हैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, और जो सेंट्रल हाईवे बोलते हैं। और जो सेंट्रल हाईवे के साथ वो गोरमेव से लेकर लासा तक इनका एक रेलवे लाइन चलता है, और रेलवे लाइन के साथ एक ऑयल पाइपलाइन भी आता है। ये अभी से नहीं, वो बहुत मेरे ख्याल में 30-40 साल से आ रहा है, और वो इसका कैपेसिटीज बढ़ गए। अगर चाइना ने हमारे ऊपर आक्रमण करना है तो ये जो लाइन है, ये जो हमारे पार, ये जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सेंट्रल हाईवे और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, इसी के जरिए बिल्डअप करना है, यहीं आके डिप्लॉय करना है, यहीं आके उसने अपना हथियार को लगाना है, और कहीं नहीं लगा सकता। ये आसमान से नहीं फायर कर सकता। तो अगर हमारा जो मिसाइल फोर्स इसके ऊपर हावी हो सकता है इस इलाके में, आप थोड़ा बहुत इधर उधर, मतलब 10-15 किलोमीटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मोटा मोटा तौर पर अगर हम इस लाइन्स को कंट्रोल करें, और इसके अंदर जो भी है, जैसे उसका पाइपलाइन हुआ, रेलवे लाइन हुआ, उसके ऊपर अगर हम असर डाल सकते हैं, तो वो बिकर, एक तो जैसे उन्होंने बोला, उसका डिप्लॉयमेंट बिकर जाएगा, वो डिप्लॉयमेंट कर नहीं सकता,
और वो पीछे की लड़ाई के बारे में सोचने की जरूरत पड़ता है, जैसे सर ने बताया। और मोटे मोटे तौर पर मैं ये अभी से बताना चाहता हूं कि ये जो लाइन है ना, हमारे बॉर्डर से तकरीबन 200 से 300 किलोमीटर दूरी है, और कहीं कहीं तो ये सिर्फ 50 किलोमीटर दूरी है, राइट। तो ये जरूरी नहीं है कि एट द आउटसेट मैं एक सबको बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारा सोच ये है कि चाइना के पास 1000 किलोमीटर रेंज का हथियार है, तो हमारे पास भी है कि नहीं। वो जो चाइना का हथियार 1000 किलोमीटर का हो सकता है, पर अगर हमें एक 200 किलोमीटर का हथियार के साथ वो काम हो सकता है, तो वो कर सकते हैं। कर सकते तो हैं, एब्सोल्युटली। तो जरूरी नहीं है हमें जो चाइना के पास है वो मैच करना चाहिए। हमें हमारे पास वो हथियार होना चाहिए ये मिसाइल स्टोरी में, जिससे हम उसके ऊपर असर डाल सकते हैं, जिसके ऊपर उसको डिटर कर सकते हैं, जिसके सर पे उसके माइंड बैटल जो सर ने बोला है वो कर सकते हैं, जिसके जरिए वो हमारे को लड़ाई करने की क्षमता नहीं हो सकता है। So all yours. If you want to highlight anything what I said in this map, we can. No, no, absolutely correct. I mean, आगे जाके we will once again revisit this Yeah, we'll slide come back and to this map. other areas which we discussed. So, so, so what is required in a missile forces? The physical capabilities to strike and neutralize enemies' operational capabilities. This requires vectors with ranges and precision strike capabilities from at least short to medium range in the first instance for India. क्योंकि इस चीज़ों को बनाने में टाइम लगता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले हमें शॉर्ट टू मीडियम रेंज के वेक्टर बताने चाहिए। जैसे भी अभी जनरल साहब ने कहा, हमारे को चीन के साथ मैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी अपनी असेसमेंट करनी है और अपने रखना है कि कितने रेंज में हमारे जो इनिशियल वेक्टर्स हैं वो काबिलियत रखते हैं, और उसके बाद फिर हम साथ में दूसरे वेक्टर की तरफ भी अपना काम बढ़ाते जाए। So therefore, and the second part, and which is the most important part, is the missile force की capability होनी चाहिए. We have to support the missile person through surveillance and targeting. We need enhanced integrated 24/7 ISR capabilities over both continental and maritime China, as also Pakistan. And this, when I say maritime China, I'm talking about Indian Ocean region, which in my perspective extends from South China Sea to the east coast of Africa. So this is a region which we have to have, and this requires fused capabilities of ELINT, comment, cyber, space, optical, and other means which are integrated through 24/7 data fusion to provide us a composite picture. This is the most important part of any missile force. First is the capability in terms of ranges. Yes, sir. When I say Yeah. capability ranges, I mean साथ में हमें warhead की भी चाहिए। कोई मेरे से सवाल करेगा कि warhead, yes, warhead has to be developed. Warhead's capacities have to be developed. Precision strike capabilities have to be there. Then we have to have it backed up by this force, because these are going to operate at long ranges. We need a much more sophisticated and integrated surveillance and targeting system. इसका एक और बड़ा फायदा है, अगर हम ये So सब can I? लेते हैं तो we will be able to pick up the Chinese and the Pakistanis movement much earlier than we could, as it happened to us in May 2020. हाँ, Yeah. yes sir, आप बोलना चाहते हैं? हाँ, Yeah. तो जो सर बोल रहे हैं, you have to understand it in a larger perspective. मिसाइल होना एक चीज है, मिसाइल को सपोर्ट करना और यकीन करना कि वो काम करेगा एक दूसरा चीज है। अगर ये दो चीज नहीं है, दो चीज का क्षमता हमारे पास नहीं है, तो ये मिसाइल फोर्स यूजफुल नहीं होगा। तो 50% जो हमारा मिसाइल फोर्स है, जो सर ने बताया, वो है रेकी सर्वेलेंस इंटीग्रेशन, स्ट्राइक इंटीग्रेशन। एक रेकी सर्वेलेंस स्ट्राइक इंटीग्रेशन एक फिलॉसफी होता है जो हमें इख्तियार करना पड़ेगा। रेकी सर्वेलेंस का क्या है, जैसे सर ने बताया, सर्वेलेंस सर्वेलेंस में आपका आता है ग्राउंड बेस्ड सर्वेलेंस, आपके आता है एलिंट इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस,
उसके बाद आता है स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस, और उसके बाद आता है मैरीटाइम सर्वेलेंस और अलग तरीके के सर्वेलेंस, राइट, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, यूएवीज वगैरह वगैरह के साथ, राइट। उसके साथ हमें जरूरत है इन सबको फ्यूज करने के लिए, क्योंकि हमारे पास ये विजुअल पिक्चर्स भी आते हैं, सैटेलाइट इमेजरी आता है वगैरह वगैरह, जिससे हमें पता चलता है कि दुश्मन का, चाइना के बारे में नहीं, कोई भी दुश्मन ले लीजिए, दुश्मन का मिसाइल एसेट्स या उसके स्ट्राइक फोर्सेस में हवाई जहाज भी आते हैं, उसके पनडुब्बियां भी आते हैं, और शिप्स भी आते हैं, कहाँ हैं और वो कहाँ से हमारे ऊपर असर कर सकते हैं, राइट। और इन दोनों के साथ तीसरी बात हमारे पास ज्ञान होना चाहिए कि हम किसको मारना चाहते हैं, क्योंकि एक शिप वहां खड़ा है, ये जरूरी नहीं कि वहां हम जाके मारें। हमें वो एक डिजाइन होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, जो असर उसके ऊपर पड़ना है वो। तो ये तीसरा है टारगेटिंग। तो ये जो सर्वेलेंस वगैरह है, ये जैसे मैंने बोला, तीन चीज हमें जरूरत है, राइट। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो रेकी सर्वेलेंस का कैपेबिलिटी है, इसका मेल मिश्रण होना चाहिए हमारा मिसाइल स्ट्राइक फोर्स के साथ थ्रू अ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। अगर ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम सही नहीं है तो ये हम कहीं जाएंगे नहीं, राइट। So if you have to add anything, or you can take it forward, please. No, no, perfectly okay, sir. So, the idea of any targeting philosophy basically is to seriously impair the opponent's war-waging potential, particularly at the operational strategic depth levels. This includes hinterland and his logistic installations, etc., as we talked about. So now what are we looking at? अगर हम यूक्रेन का देखें तो उधर हम क्या लड़ाई चल रही है, एक लेवल पे फ्रंट लाइन पे हो रहा है, बीच में ओडिशा पे लड़ाई हो रही है। ओडिशा में उनका उधर एक इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल हब है, साथ में उनका एक पोर्ट है, और साथ में वो जो है नेशनल ग्रिड्स, पावर ग्रिड्स वगैरह को वो टारगेट कर रहे हैं। साथ में स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस वगैरह को टारगेट किया जा रहा है, जैसे कि आपने देखा 2-3 बारी जो क्रीमिया का ब्रिज है उसको अटैक हो चुका है। सो लेट अस टेकिंग दिस इनटू अकाउंट, बेसिकली व्हेन वी आर लुकिंग एट चाइना, मैं मोटे तौर पे जा रहा हूँ, मैं जान के नहीं जा रहा डिटेल के अंदर, बिकॉज वो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। द इम्पोर्टेंट थिंग इज the PLA Western Theater Command is the center of gravity of all operations against India. We must be able to define, identify, and we have the capability of attacking targets in Western Theater Command, which will require missile capabilities of up to about 1,000 kilometers and below. So basically जो है हमारे जो है, अगर हम अब देखें वेस्टर्न थिएटर कमांड के अंदर, तो जो मिलिट्री टारगेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, द मिलिट्री टारगेट्स आर विद इन द रेंज, मैक्सिमम रेंज ऑफ 800 and 2,000 kilometers plus. That's about all it would matter. But at slightly in the depth, there are 8 to 10 important industrial hubs which support the region and which are the primary hubs for supporting the Chinese war effort. Now, idea basically is this, that I must have missile capability which has a range, and ability to cause damage to these 8 to 10 industrial hubs. I am not going to use them. मेरा आइडिया मैं ये नहीं कहता कि मैं अपनी मिसाइल लगा के उनको डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। मेरा आइडिया सिर्फ ये है कि अगर मेरे इंडस्ट्रियल हब्स के ऊपर अटैक होता है और अदर साइड believes that I can degrade India's core industrial hubs, which will bring down our war waging potential or will cause us huge amount of industrial and other damage. The other side must understand that he is equally vulnerable. The mutual assured vulnerability will ensure
that he will have to think 10 times before exercising such a choice. And the second area जो मैंने एक सॉरी जो अपने दिमाग में लगा के बात करने की कोशिश की है, वो है पर्ल रिवर डेल्टा, which is the hub of Chinese development. So, houses about 4.3 million of the Chinese population, is the biggest economic hub of the country and responsible for nearly 27% of country's export. It is defined by the World Bank as the largest urban area. Now, ये एरिया जो है हमसे 15 से 2000 किलोमीटर दूर है. Now, why I am saying Pearl River Delta? अभी मेरी ये बात ध्यान से सुनिएगा. Chinese 21 मिसाइल सिस्टम जो PLA के पास है, वो इंडस गंजेटिक प्लेन को हिट कर सकता है विद 1000 to 1200 to 1300 kilometers range. The India's Indo-Gangetic Plain is within the range of all medium-range missile systems of China. And also understand that हमारे पास जो है उसके exchange targeting के अंदर, except for these 8 to 10 hubs in in Western Theater Command ये इलाके में, वो नहीं है. So I have to develop capacity and capability to ensure that his larger comparative industrial bases and his population centers are held equally hostage as he can held hostage. He can hit Delhi with a missile system of 1300 kilometers, sir. So this is something which we need to understand. I have a map which I'm not going to show, but there is but that is what the whole equation is, and this is something which we need to understand when we are looking at developing of missile systems, particularly in terms of a conventional missile capability. Now, हमने वो मैप बनाया है सर, और मैप आप दिखा सकते हैं सर. तो नेक्स्ट या जो सर बता रहे हैं, ये दोबारा देखिए, ये जो लाइन है ना आपका, न्यू दिल्ली से लेकर जो रेड लाइन है, राइट, वो तकरीबन 12 से 1500 किलोमीटर दूरी है. तो जो सर बता रहे हैं यही है कि उसका क्षमता है कि ये ये जो इनका जो एक्सप्रेस हाईवेज है, वहां से वो दिल्ली के ऊपर मार सकता है. तो अगर वो मार सकता है, हमारा काबिलियत ये होना चाहिए कि उसको ये ना डिनाई करो एरिया. और डिनाई कैसे करोगे? ये जरूरी नहीं है हमें 12 से लेकर 1200 किलोमीटर की रेंज की जरूरत है, क्योंकि कहीं भी अगर हमारा समतल इलाका प्लेन से लेकर उस लाइन तक अगर आप खींचोगे तो तकरीबन 500-600 किलोमीटर की दूरी रेंज है. अगर हमारे पास 500-600 किलोमीटर की रेंज की है, तो हम तकरीबन मोटे मोटे तौर पर, ये तो मैं मोटे मोटे तौर पर एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ, कहीं भी इस इलाके में उसको डिप्लॉय करने को नाकार करने का क्षमता आ जाता है. उससे क्या है, हम उसको डिस्पर्स कर देते हैं, उसको डिटर कर देते हैं और उसको जगह नहीं देते हैं. उसी को बोलते हैं हम एंटी एरिया और एंटी एक्सेस डिनायल, राइट. वो तो ये जो सोच है हमारा, पीएलए का सोच कुछ हो सकता है, हमारा उसके विपरीत सोच और तरीके से करने की जरूरत है, राइट. द नेक्स्ट थिंग, सो दिस इज द वन जो नॉर्थ ईस्ट से लेकर कहीं भी ये लोहित के आगे जो लास्ट है पॉइंट, वहां से अगर आप राइट में देखोगे तो वहां आता है क्या, कुनमिंग और चोंगकिंग, राइट. तो ये इन दोनों शहर जो हैं वो बड़े शहर हैं और इनके इंडस्ट्रियल शहर हैं. अगर हमारे पास हमारे पास इनको मारने का क्षमता है, तो हम इनको नाकार कर सकते हैं, इनके जो काफी हद तक, लाइक ही सेड, वी कैन होल्ड देम टू होस्टेज. ओके, सो ऐसी बात नहीं कि हमारे पास ये काबिलियत नहीं है, कुछ हद तक है. इसके ज्यादा हम इस ओपन फोरम में हम बात भी नहीं कर सकते. सर, नेक्स्ट मैप शुड आई शो? हाँ, प्लीज, इम्पोर्टेंट. हाँ,
हाँ, नेक्स्ट मैप ये है कि ये जो अंडमान निकोबार है, हम बोलते रहते हैं अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार से मलाका स्ट्रेट कैसे बंद कर सकते हो? अगर आप वो हमने जब जनरल अजय सिंह से बात किया था उसके साथ, वो अंडमान निकोबार आइलैंड और उसका पूरा इसके बारे में 3 हफ्ते पहले, और आज सवेरे मैंने उस वीडियो को दोबारा जारी किया। इसके बाद कृपया इस वीडियो को भी देखिए। ये 10 डिग्री चैनल है। ये 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बीच में है, जिससे दुनिया के सब ज्यादा से ज्यादा जहाज जाते हैं, राइट? बेसिकली कार्गो शिपिंग। और अगर आप देखोगे तो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है, कहीं भी अगर आपके पास 500 से लेकर 1000 किलोमीटर का रेंज का अगर मिसाइल है, तो आप मलाक्का स्ट्रेट में जो भी हरकत हो रहा है उसके ऊपर आप हावी हो सकते हो, और 10 डिग्री चैनल के ऊपर भी आप हावी हो सकते हो। और ऊपर अगर अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड में भी अगर आप एक मिसाइल लगा दोगे तो ये 10 डिग्री चैनल बंद हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि मलाक्का स्ट्रेट को ही बंद करो। आप ये चैनल्स अगर बंद कर देंगे तो आधा शिपिंग गायब हो जाएगा, और उससे मलाक्का स्ट्रेट भी बंद हो जाएगा। वो बात अलग है कि क्या हम मलाक्का स्ट्रेट बंद कर सकते हैं, इंटरनेशनल शिपिंग वगैरह 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 है, वो अलग बात है। पर हमारा क्षमता ये होना चाहिए। सो यस, ऑल यस। ओके, सो अगर हम पाकिस्तान की तरफ देखें तो पाकिस्तान की जो है स्ट्रेटेजिक डेप्थ है 300 से 800 किलोमीटर की मैक्सिमम। तो उसके लिए हमारे पास जो है वी जस्ट नीड short distance missile systems with low time of flight and subsonic and supersonic missiles. That's all that we require for Pakistan. Maritime domain में जैसे उन्होंने बोला, we have a threat, major threat building up from China, building up a world-class power navy, which will be operational, particularly in the Indian Ocean region by about 2025 to 2027. They are building a J-15 aircraft carrier. They conduct their third aircraft carrier type 003 is underway. We are just seeing some pictures. So bottom line ये है कि चाइना का मैरीटाइम थ्रेट जो है वो इंक्रीज होने वाला है। उसके लिए डील करने के लिए हमारे को सिस्टम्स चाहिए जो कि उसको डिग्रेड कर सके। और मेरी समझ में जो है बातचीत करने के बाद जो सिस्टम नजर आ रहा है वो है 15 से 1700 किलोमीटर रेंज की ब्रह्मोस और इक्विवेलेंट क्रूज मिसाइल which can be developed in short term, next 3 to 5 years. I mean, I will say 3 years. मेरे कहता हूँ 3 साल में, ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 साल खींच सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं. So the idea basically is to be able to effectively dominate the Arabian Sea, including the Gulf of Oman, Persian Gulf, ports of Karachi, Gwadar, Charbagh, Makran Coast, Bay of Bengal, and the ports around it. And like we showed you on the map, Malacca and आगे जाके Sunda Straits, जो भी and all the way up to the Chagos Archipelago. The bottom line basically is this, that we need a slightly longer range missile system, primarily based on cruise missiles, to be able to hold at bay the PLA Navy. Now, when we're talking about a 1500 to 1700 kilometers BrahMos or other cruise missiles, we are basically replicating the DF-26D, which the Chinese are make. We have the capacity of making anti-ship ballistic missiles, and we need to developing them on the lab is one thing, but getting them onto the on the developmental cycle and developing in numbers is what our requirement is. So basically, when I'm talking about requirement of missiles, we are looking at 4 different types of missile systems. We are looking at subsonic cruise missiles with ranges up to 1,000 kilometers. We are looking at supersonic cruise missile BrahMos of ranges 8 to 1,500 kilometers. And we are also looking for, and this is again an area which we need to
press hard in developing hypersonic systems of 2,000 to 4,000 kilometers. And then we have shown promise in developing a quasi-blasting missile system like Pralay. We need to develop them in good numbers at a fast pace so that we have the initial uh, bearings of a missile force, and add to it developing an Agni Prime with ranges 1500 2000 kilometers with a conventional warhead, so that we are able to uh, uh, to have the requisite ranges that we have discussed in terms of our targeting. So, so this is what. So, as far as the desired missile capabilities are concerned, I will just highlight the following issues, which we already discussed. We need to have precision strike capability with minimum collateral damage. The ranges I've already separate different types of ranges. We need to have adequate damage and destruction potential at long ranges. Our minimum probability of being intercepted, cruise missiles are the best, more difficult to detect and intercept as compared to the ballistic and the quasi-ballistic missiles. We will see our own program. We have a fairly effective air defense program. So the question basically is that a cruise missile is the way to go, and that's why I'm emphasizing on using BrahMos and its variants to be the first elements of our effective missile force capability. The more important thing is production processes need to be streamlined and fast-tracked for developing an adequate, credible minimum force in a specified number. Indigenous production capability of the non-operational required numbers is an essential. Here, I would like to highlight uh, that the major issue now comes about is the command and control. There are there are there are people who feel that it should be similar to the Chinese. Knowing our systems, I don't think it is a very viable solution. We need to have a separate structure. The question is separate structure. How will the command and control will flow out of it? The two things are important over here. One is that we need to accept the fact that since the targeting is going to be operational at strategic level, this will require a much higher level of clearances. You at up to operational depth, you can fire anything you want, it's okay. But beyond that, it is requires a high level of clearances because that is linked to the threshold of tolerance of the other guy. The other guy's thresholds, if they are low, he will respond. He will respond in a much higher fashion, or he can even go into a strategic response, that is a nuclear response. We don't know. This is a game in which most people can only speculate because this will be decided by the leadership at that particular point in time. But the important thing from a command and control point of view are the following. One, the systems, whatever be the organizational structure, must have back-end interlink with at least the chiefs of staff committee, as well as some relationship with the strategic forces command. They may not be under their command; they may be separate issues. In my view, they should be theater forces with back-end connectivity to the strategic forces command. With and the second issue is, to my mind, even more important than that, there should be a common sharing of the ISR picture. The ISR picture of the rocket forces as well as the strategic forces command must be complementary. You can decide at the level of the joyer as to how much you want to show, how much you do not want to show. But my point at issue is this, that at some stage, if you're looking at strategic employment or even tactical employment, there would be an escalation. And then escalation will put in demands of response. And that demands of response. See, so far when we are looking at the battle, हम देखते हैं कि जी माउंटेन में लड़ाई हो गई, एक दो हिल हो गई,
उसके बाद खत्म हो जाएगी, या ग्राउंड में हो गई, हम तो 20 किलोमीटर जाके 30 किलोमीटर जाके हम लड़ाई खत्म कर देंगे। परंतु इसके अंदर जो है, वी आर नाउ टारगेटिंग हिज एसेट्स. Now, once you start targeting his assets, his response is going to be a different thing. So that is where we need to understand that there has to be a connectivity between the SFC and the missile force. And second, there has to be a certain degree of overlap in terms of command and control, both at the Chiefs of Staff Committee as well as the political level. I'll stop here and I will request. या तो जो सर ने बताया है वो कमांड एंड कंट्रोल के बारे में और इसका जो मिसाइल फोर्स का कॉम्पोजिशन के बारे में और वगैरह किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये एक नया चीज है, ये नया सोच विचार है ये, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई पीएलए के पास एक मिसाइल फोर्स है, हमारे पास नहीं है, क्या आर वी एट डिसएडवांटेज? वी आर नॉट, क्योंकि ऑलरेडी लॉट ऑफ दीज थिंग्स आर ऑलरेडी इन आवर थिंग, क्योंकि हमारे पास है, हमारे पास डेफिनेटली ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है, इसमें दो राय नहीं है। क्या हमारे पास स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है? वो भी है। हाँ, कुछ मिसिंग पॉइंट्स हैं इसके अंदर, कुछ मिसाइल सिस्टम्स की जरूरत है बीच में लाने के लिए, वो नंबर एक। नंबर दो, क्या ये लड़ाई लड़ी जाएगी जिस तरीके से हम सोच रहे हैं, ये बात कर रहे हैं? बहुत मुश्किल है ये सवाल का जवाब देना। वो क्यों? क्योंकि इस तरीके से जो मिसाइल फोर्सेस के बीच में जैसे मिसाइल फोर्सेस आ जाते हैं, उसके बाद क्या होगा, किसको हम स्ट्राइक करेंगे, वो किसको स्ट्राइक करेंगे हमारे ऊपर, ये बहुत आगे की सोच है। और अगर हम पिछले 30 साल की वक्फा ले रहा हूँ, अगर हम देखेंगे तो हमने एक बुलेट भी नहीं फायर किया, और हम फिर अभी हम बात कर रहे हैं मिसाइल फायर करने के लिए, राइट। Very good. और ये भी ध्यान, एक तरफ से ये बात है, पर दूसरी तरफ से ये भी बात है कि वो उसके पास है ये मिसाइल्स, उसके पास न्यूक्लियर सिस्टम्स बढ़ा रहा है। तो हमें भी ये नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि पिछले 30 साल में ये नहीं हुआ तो अगले 30 साल में नहीं होगा या अगले 2 साल में नहीं होगा, ये हो सकता है। तो उसके लिए हमें सतर्क होना चाहिए। और जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ता जाएगा, हमारे पास वो काबिलियत होना चाहिए जिससे हमें उसको ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। जब तक उसको ये ना पता चले कि हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, तो वो हावी रहेगा। कुछ हद तक है, कुछ हद तक नहीं है। और जो भी ब्रिगेडियर साहब ने बताया आज, वो सब नया चीज है। इसके बहुत क्या सोच विचार होगा, इसके बहुत और दृष्टिकोण होंगे, राइट। ये जो हम आज बात कर रहे हैं वो एक ही दृष्टिकोण है, और कुछ छोटे मोटे दृष्टिकोण है ये पहले पहले सोच है जो हम ओपन इसमें ला रहे हैं। बात यह है कि ये आज का प्रोग्राम है, ये इसमें कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, और कोई ये नहीं है। सिर्फ ये एक सोच है, पहल है ये, कि इन चीजों के बारे में आप सब लोगों को हम बता रहे हैं, राइट। इसमें what he has said might not be completely true. It is not true by design. ये नहीं कि ये इन्होंने सही नहीं बोला, ये इन्होंने सही इसीलिए नहीं बोला क्योंकि ये हम एक ओपन सिस्टम में बता भी नहीं सकते, राइट। तो कुछ हद तक हमने आज आपको जो कन्वे किया वो सही है, कुछ हद तक गलत भी है, राइट। ओके, तो ये मोटे मोटे तौर पर हमें पता होना चाहिए कि हमारे अंदर ये कुछ काबिलियत है, कुछ सोच है, और इसको ये आगे जाके इसको क्या उभर आएगा ये हम देखेंगे, ठीक है। ओके, कुछ सवाल हैं यहाँ कि अग्नि मिसाइल ठीक है या नहीं है, वो इसका रेंज क्या है, उसका रेंज क्या है, वगैरह वगैरह। जो मेरे को महसूस हो रहा है कि सब जो भी इक्का दुक्का पढ़ रहे हो आप लोग, और न्यूज़पेपर में या कोई लिख देता है पत्रकार, उसके जरिए आपका कुछ आइडिया है इस पूरा कहानी के बारे में, जो बिल्कुल गलत है। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, जो जो आपके कमेंट्स में हम देख रहे हैं उसमें मेरे को बड़ा क्लियर जाहिर हो रहा है कि इसके ऊपर थोड़ा नॉलेज गेन करने की जरूरत है। तो मैं 10-15 दिन के बाद या टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ आई विल गो अबाउट एक्सप्लेनिंग ईच टाइप ऑफ मिसाइल टू यू। और मिसाइल, क्रूज मिसाइल क्या होता है,
हाइपरसोनिक क्या होता है, और ये अगर आप बोलोगे तो सबसोनिक क्रूज मिसाइल क्या होता है, राइट। और एक क्या बोलते हैं उसको, क्या MIRV क्या होता है, और ये अलग अलग रेंजेस किस लिए काम आते हैं, इसका क्या गाइडेंस सिस्टम होता है, क्या होता है, मैं आप लोगों को आराम से मैं बताऊंगा किसी दिन, जो ये नहीं है। आज हमें सिर्फ ये मिसाइल फोर्स का ट्रिन, जो मोटा मोटा सोच है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। ये हम मिसाइल्स के बारे में नहीं बात कर रहे हैं कि क्या PLA के पास लंबा मिसाइल है, हमारे पास छोटा मिसाइल है, ऐसे कोई नहीं है, Absolutely. राइट। एक और चीज याद रखिए, ये मेरे को ये बात 1988 में, जब मैं DRDL में एज अ मेजर पोस्ट हुआ था, राइट, मेजर था तब मैं, उस वक्त मैं पोस्ट हुआ था, और मेरा बॉस थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो उन्होंने बोला, कम शंकर, सिट डाउन, सब ठीक ठाक, वेरी गुड एवरीथिंग। तो ऐसे बात चलती रही। उन्होंने एक बताया एक चीज, जिस देश के पास एक स्पेस प्रोग्राम होता है, उन दिनों में हम PSLV लॉन्च करते थे, उन दिनों में हमने सैटेलाइट भी लॉन्च कर दिया, आज तो हम चांद तक पहुंच गए। जिस देश के पास अभी आज अगर वही बात आज के इसमें संदर्भ में अगर मैं बताऊं, जिस देश के पास चांद तक पहुंचने का क्षमता है, और जिस देश के पास उसके अंदर एक रोवर नीचे गिराने का क्षमता है, बाकी जितने भी क्षमता जो ब्रिगेडियर अरुण सहगल साहब ने बताया, वो है हमारे पास, हमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये चीज लेके चलिए, ये सिर्फ वक्त की बात है, जिस दिन हमारे पास एक मिसाइल फोर्स होगा, उसका आकार क्या होगा वगैरह वगैरह हम देखेंगे। So anything else you want to say? Otherwise, I'll take a few questions and Yeah, let's take let few me questions. I'm achieve. okay. Thank you very much. I enjoyed being the thing. I hope I was some useful. No, you're first class, sir. All right, we know the thing. Okay, we'll take this question, which is simple. So, how armed forces decide which missile to use in which condition in same distance target, cruise missile versus ballistic versus hypersonic? You want me to take it on? Yeah, you can take it on, or if It's your area. Okay. no, sir. फिर भी, Okay. if you want me to talk, I'll talk. Basically, when we want to decide on the missile system, that's what we call target analysis. What is the kind of target? Which is the best system uh, to engage the target? What is the air defense environment? What are the kind of systems that he has deployed? So when you are in the modern warfare, where there are large number of systems which are operational, uh, we have to take cognizance of the entire environment. Can my missile be shot down? What kind of system does he have? How do I degrade his air defense systems, etc., etc. So it's a complicated choice made through computing and understanding of the target, and then you decide on what missile system to do. The ballpark figure is that if you are a short range targets about 300 to 400, 400, the Pralay system or the nearby systems will work for us. We don't have to go. Then the issue comes about is the cost. I mean, you do not want to use high cost systems for just to degrade an ammunition dump for the other side. You need them for a much more sophisticated targets. So it's a multiple choices. The security environment and the kind of damage you want to do on the other side will decide on the system you want to use. And also, it depends on how much, whether you have a missile, that particular missile system in place or not, availability. You might have a target for which you only have one type of missile, so you're forced to use that type of missile, right? So, and the terrain also factors in, because you have to understand ये जितने missile system है, अगर आप इनको हिमालय में चढ़ाना है तो उसको दिक्कत अलग होगा, अगर आपका वो टारगेट हम नीचे से फायर कर सकते हैं, उसका इफेक्ट अलग होगा, वो अलग अलग है। बट एक सोच विचार के बाद ही हम करते हैं, इसका कोई नाप
ये नापतोल ये नहीं है कि अगर ये है तो ऐसे हम करेंगे. It's a value judgment at the end of the day which you have to go in for. Okay. Mm, right. So I don't want to talk क्योंकि okay. I'll just say this. Someone has said hypersonic is over 2.5 Mach. Ballistic missiles are always supersonic. We don't have control over them. See, let me tell you, there is no missile which doesn't have a control. Every missile, whether it is ballistic or otherwise, is controlled, first and foremost. A hypersonic missile is something which goes in excess of 5 Mach, right? Anything less than 5 Mach is not hypersonic, really. Why it's called hypersonic and why 5 Mach is the moment you go into 5 Mach, the trajectories are different, the materials are different. You need a glide vehicle, you need to use the rotation of the earth to get speed. There are technical issues, so we'll not get into that. Whereas when you talk about ballistic missile in the normal sense, you're using a normal propellant, but guidance is there because without a guidance, you just don't fire all around the countryside. And especially when it is going to at 3 to 4,000 kilometers away, even 1,000 kilometers away, it has to be proper targeting. Why you say ballistic missile is one with a conventional warhead generally. The other one is a nuclear tipped on a strategic warhead. So that is the mota difference. Now there is no pakka guarantee that you must have a ballistic missile which is Mach 1 plus. It's not necessary. Incidentally, Mach 1 or Mach 2 or Mach 4 or Mach 3, it doesn't matter much because it's the initial speed which is Mach 1, Mach 2 or Mach 3. Final speed is different, right? So there are a lot of things and so we'll not get into that. वो मैं किसी और दिन ये बोलूँगा. For example, if you take a BrahMos itself, there are sea skimmers, there are top attack, there's so many other things. Okay, so we'll leave it at that. Okay, someone has asked what's the difference between Agni 5B and 6B. ये सब मैं आज we are not talking of. Okay. We are also not going to. Someone has asked questions about radioactivity, nuclear warheads, plutonium warheads, and all that. This is not the. Yeah, nahi. This is conventional missile discussion. Yeah, we are talking of conventional missile. We are talking of non-contact conventional deterrence. Why I chose this subject, मैं आपको बताना चाहता हूँ. Non-conventional conventional deterrence. ये नया चीज है हमारे पूरे फौज के लिए. ना हमारा एयरफोर्स के साथ ये क्षमता है या नेवी हमारे साथ. ये सोच आगे बहुत इम्पोर्टेंट है. ये सोच इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हर वक्त हम न्यूक्लियर मिसाइल्स के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स के यू कैन नॉट रन टू द न्यूक्लियर वेपन्स एट द स्टार्ट ऑफ कैंपेन. Okay, let me ask this. So I'm sure you would know. What are our options against the overwhelming missile attack? Do we have soft and hard kill defense fully deployed against such an attack? Do we have real-time radar capabilities? Yeah, we have a BMD systems in place. We have developed a fairly advanced ballistic missile defense systems, and we would be able to stall the attack. But the question Yeah, is, yeah. numbers are limited. We will deploy them in areas which we consider are highly strategic in nature and which we must protect under all circumstances. So, keeping those issues in mind, uh, the bottom Yeah. line, as far as you should know, is that India has developed a credible air defense capability, and we have ballistic missile DMD systems in place. We are improving them. We have numbers may not be adequate, but it's a ongoing process, and therefore, it's important to understand is that we have the capability. It may not be adequate at this point in time, but that's exactly the point I was trying to make. If the other side thinks that it can launch a saturation attack, of the large number of missiles on one target, we must be able to tell him, send him a calling card back that we also have the capability of hitting you and hitting you hard enough. So that's the important point. So this is a game at one. In the conventional missile system, the game is played at two levels. At one level, it deterrence, but the chances of deterrence failure are much higher
and therefore it is also of use. It is both of deterrence and use. So anybody who is looking at conventional missile force, he has to have the planning for usage. He cannot. In the nuclear factor, we do have a planning for usage, but we, at least in Indian perception, nuclear weapons are political weapons. We do not want to do. We are not in the game of fighting with nuclear weapons, but in the conventional missile systems, we will be, and even if we are not, we will be forced to fight in the conventional warfare, and that is why, as Ukraine and other places indicate, we have to have capacities, we have to have capabilities, we have to have numbers, and we have to have ISR systems, which the general rightly talked about. So, right. The last point I would like to make is, अगर आप यूक्रेन की लड़ाई को अगर आप एनालाइज करोगे तो हमें पता चलता है कि रशिया ने बहुत मिसाइल दागे हैं यूक्रेन के ऊपर, फिर भी यूक्रेन लड़ रहा है। इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता चाइना के पास कितने मिसाइल है वगैरह वगैरह, वो मार सकता है, कहीं भी मार सकता है, कुछ भी हमें हानि पहुंचा सकता है। बट लड़ाई जो जीता जाता है वो मोर्चे के ऊपर जीता जाएगा, ठीक है। एंड वो तो अगर यूक्रेन से ही अगर हम एक सबक सीखे तो अगर आप देखोगे तो यूक्रेन का लड़ाई है, इज अ बैटल ऑफ अनइक्वल। रशिया का बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है एज कंपेयर टू यूक्रेन, Ukraine. हमारा वो नहीं है, याद रखिए। एक और चीज है जिसमें हमने सिर्फ लड़ाई जो है मिसाइलों के साथ लड़ाई नहीं जाता, लड़ाई जो लड़ते हैं देश लड़ते हैं, एक देश दूसरे देश से लड़ता है। ये लड़ाई जो है तो फौजों के बीच में नहीं होता, और देश के पास सिर्फ मिसाइल नहीं है, बहुत और हिस्से हैं। और याद रखिए तिब्बत जो इलाका है पूरा, हम उसमें आग लगा सकते हैं, उसका तरीका अलग है। तो इसके साथ हम आई थिंक वी हैव कवर्ड द होल थिंग सर, बिकॉज वी डोंट आई विल नॉट लाइक टू गो इनटू द specific questions which they've asked. You have anything to say, sir? We can Thank just you very move much, into sir. the... I enjoyed being on your show as usual, and thank you for for bearing with me. And I No, no, and sir. I I think you respectfully आपने बहुत enjoyed. अच्छी तरीके आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया कि हमारा मोटा मोटा सोच विचार क्या होना चाहिए। एक वही मुद्दा पर्पस, वही था। मोटा मोटा सोच विचार की जरूरत है। जैसे मैं भी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ना वो गलत हो सकते हैं ना सही हो सकते हैं, क्योंकि हमारा मोटा मोटा सोच विचार अभी तक बन ही रहा है, राइट। बिल्कुल। और सो ये कहानी इट विल कीप अनरोलिंग। आई विल लीव इट एट दैट। थैंक्स फॉर Thank you. बेयरिंग विद अस। मेरे को पूरा पता है कि मैंने और हमने आज के दिन आपके जितने सवाल हैं उसका जवाब नहीं दिया। आज इसीलिए नहीं दिया कि हम एक तरीके से देखेंगे तो हम दे नहीं सकते, दूसरे तरीके के उसके लिए जवाब है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि ये कोई डॉक्ट्रिन बना नहीं, कुछ नहीं है। तो इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, सो बी पेशेंट। But definitely, in the next program, I'll explain to you the issues involved in each kind of a missile system, the technologies and their capabilities, of which I have a fairly good idea, right? So that will wait till the next event. Till then, good evening, thank you, and Jai Hind. Jai Hind, sir.